Okay, concentrate. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We have done all these things, right? So we do one recapitulation of what? We have to do now delete all, huh? Yes. Then what? Reverse and And search. But you should be able to, you have the logic. जो इसका logic है ना वो आप में अंदर आ गया है ना logic. You got the logic, right? So now you need to do what? You need to apply your logic now. जो basics आपको है वो आ गया ना. अब इसमें लिंक इधर जाएगी, वो लिंक उधर जाएगी, उसका हिसाब किताब करना है. लेकिन जो basic फंडा था, you have that in your brains. So use your brain now. Okay? So specified तो हो गया. There is a beep in it. Yeah, you need to switch off your computers. Okay? No need. You don't need your computers right now. You can switch that off because that will still work. Because we don't need now your you just concentrate here and you already have the code, right? Yes. So we'll just do this. If we have to delete all, what does that mean? We want to delete all the linked lists. So if you want to delete all the linked list, what does that mean? That for example, we may have in start firstly null. What does that mean? There is no linked list. Linked list is empty. If the linked list is empty, you can't delete anything. So that means if start, we should have a beginning here. If start is equal to null, Delete that is, if the start is null, we say linked list is empty. So can you delete anything? No. So you can come to the else part only when there is something. So when start is not null, that means what will start have then? Have address on the first It will node. have the address of first node, obviously. Right? But we don't know how many nodes we have. We may have one node, we may have 10 nodes, we may have many nodes, right? Yes, sir. And the last node will have the null in it, right? So first node is here. So if it is address is 1, the start will have 1. If its address is 2, the link part start will this will have 2. If the address is 3, the link part will have 3, and so on. Right? Okay. Now, if such is a scenario, we want to delete everything. I want to delete what? Everything. Say for example, I get my PTR here. Okay? And I want to delete this. If I delete this PTR, what will happen to this? Address of this is gone. Yes, sir. We don't know कि ये कहाँ पे है. Do we know that? No, sir. क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास है. अगर आपने इसी को डिलीट कर दिया ना, इसकी गेम बजा दी, उसके साथ साथ सारा लिंक्ड लिस्ट पानी में गया. So I need to know the address of this before I can delete this. Yes, sir. Right? So I need to have a pointer on this before I can delete this. Yes, sir. Okay? So let us see what is the code. So let's delete end. See, this is the delete end. This is not the thing, right? This is the delete end. So delete all is here. Right? So I am saying if start is null, nothing to delete. Okay? Linked list is empty. Then we are running a loop. We are saying while start not equal to null. Start खुद जब तक null नहीं होगा. Start खुद जब तक नहीं होगा. तब तक ये लूप में बना रहेगा, तब तक ये while लूप चलती जाएगी, जब तक कि स्टार्ट खुद null नहीं है. क्या अभी पहली बार जब है क्या स्टार्ट null है? स्टार्ट में क्या है? पहले नोड का एड्रेस. First address of everybody will speak. First node's address, right? Yes. Now you should be able to speak, na? Yes. So first node's address is the start. So start is not null. So what I am saying is PTR is equal to start. I am putting PTR with the start. What is in start 1? So PTR will point to the 1. Yes, sir. So start will have 1, that is start is pointing to the first node. PTR will also have what is in start, that is 1. So PTR is also pointing to the first node. Right? I could delete this, but if I delete this, then this is gone. Yes, sir. Before I delete this, I make this start to point this. Yes, sir. Right? Before I delete this, I want start to point this. Right? And then this is free to delete. How I make start to go here? Start is the start. Because my PTR is pointing to this guy, my start is pointing to this guy. I have no access to this guy. But its address is here. And I can access it. Because my PTR is pointing to this node and start is also pointing to this node.
So I can access this too, which is address of second node. So I want कि start में इसका address होना चाहिए. यहाँ पे आप देखो, आप concentrate करो. Don't write anything. Concentrate and speak. You don't have to write anything. Understand? Just concentrate and speak. ये जो ये नोड है इसका एड्रेस कहाँ पर है? यहाँ पर है. इसको मेरे पास एक्सेस है क्योंकि दो पॉइंटर्स लगे ना अभी. मैंने जब कहा ptr is equal to start तो ptr और start दोनों पॉइंट कर रहे हैं पहले नोड को. I can access this data, I can access this link using either start arrow data, start arrow link or ptr arrow data, ptr arrow link. I cannot access this. But what I want, मैं चाहता हूँ इससे पहले मैं इसको डिलीट करूँ, ये start इसको पॉइंट करे. ठीक है ना? So इसका एड्रेस क्या है? वो कहाँ पर है? So start के अंदर क्या जाना चाहिए? Start arrow लिंक start में जाना चाहिए start arrow link. और ptr What is in start arrow link? Two. Address of second node. Concentrate. That's what I'm telling you. Address of. second node. So I am saying start is equal to start arrow link. Start is equal to. Start arrow link. Now what will go in the start? 2. 2. Tell me exactly. Okay? That is 2. 2 will go into the start. Because I say start is equal to start में डालो start arrow link. What is in the start arrow link? 2. So this 2 will go into the start. So what does that mean? कि अब start is no more pointing to this. Start is pointing to second. Start is pointing to. Second node. I can free this. Yes sir. Free ptr. So this is gone. Okay? क्या start में null है? नहीं. Start में क्या है? 2. Because it comes back to the while loop ना? Start में null नहीं है ना? Yes. So this is true, not equal to null. It's true. Yes sir. Again, ptr is equal to start. Now start को point करता है इसको. So ptr will also point to this guy. ठीक है? Start में क्या डालेंगे? Start arrow link. That's free. What is in the start arrow link? Free. That's with this node address. That means start is no more pointing to this, right? Yes. Start is pointing to Third node. third node, and free ptr gone. Yes sir. ठीक है? Free ptr, ptr is gone. Again the loop goes up. क्या start में null है? No sir. Start में 3 है ना? हाँ. Start is 3 in it, right? Start में null. नहीं. Start is equal to start arrow link. Start is equal to start. What is the start arrow link? Null. Now this time start will have null in it. Okay? Yes sir. What will we do to the ptr? Free. Because पहले आएगा ना ptr start. ptr इसको link करता होगा. We delete this. So I am deleting the last node also. It comes back. क्या start में null नहीं है? Null है. That's false. This condition is False. because null है इस वक्त. So it will not go into this loop. It will come out of the loop. It will go here, and it has deleted in the meanwhile whole linked list. Yes sir. Does it make sense? Yes sir. Isn't it simple and easy? Yes. Right? If you have any problems, get back to the video. Okay? Okay. Now we want to do the search. We want to do what? Search. I want to search something in the Linked list. linked list. I want to search something in the linked list, right? थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए. I want to search in a linked list. Again, a very simple thing, right? It's again the same stuff we are doing, right? Again the same stuff, whatever it is. So what is that? Is I want to search something. I want to Search something. first scenario maybe in the start we have what? Null. If you have start null, Nothing to search. what can you search? You say, bro, it's linked list is empty. पहले create तो करना, फिर जाके search कर. अभी क्या search कर रहा है? तो कुछ नहीं है. ठीक है? Getting my point? Yes sir. तो ऐसा हो गया कि गाड़ी खरीदी और पैसा भी कमाया नहीं, तो पैसे कमाओ पहले फिर गाड़ी खरीदो. So अभी तो इसमें कुछ है नहीं. ठीक है? Now other scenario can be we have one or many nodes. This is start, and we have some nodes, say 1, say 2, or say 3. Maybe 2, 3, 4, any nodes or one node, whatever that is. So this will have 2 in it. If this 1, start will have 1. It is pointing to this. This will have 3. If its address is 3, and this will have null in it. And I want to search something. Say it has data. Data is 10, data is 20, data is 30. Right? Because we have data and link. Two parts. Data and now we want to search. What do you want to search? You may be searching some data. So that means you will have one key variable
which will ask user कि क्या ढूंढना चाहते हो, and we put that in a key. Simple, right? Simple logic. And we also have some position. I don't know why we have position. Let me see this. And search operation goes on. If start is null, we say what? Linked list is address. Then we display. In display, we will show what we have already. Okay, for us. Then enter key to search. Enter key to Search. Now you will ask user what you want to search. Say for example you want to search some 30 or 20 or 10 or something, or maybe he is searching 40 which is not in a linked list. Yes, sir. Okay, so there are two scenarios. One scenario is my key is not in a linked list. फिर मैंने पूछा होगा ना कि तू मत 40 है, तू मत 40 है, तू मत 40 है, भाग गया. तो उस सूरत में जब नल आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा लिंक्ड लिस्ट? Because I will not do it forever. I have to come out na sometime. Yes, sir. One scenario will be कि मैंने ढूंढा सारे नोड और मेरे को नल मिला और वहां पे नहीं था. So then I can say this key is not found. Okay? Yes, sir. और दूसरी बात मैं 10 फॉर एग्जांपल मैं 10 ढूंढ रहा था. मैं ढूंढ रहा था क्या? 10. तो मिल गया. आगे जाने की जरूरत है? नहीं. उस वक्त भी भागना चाहिए. हाँ. At that time also I should get out of the loop. Yes, sir. Right? So two scenarios. One, I have searched it all. I got the null. That's the last. क्योंकि null किसके पास होगा? Last. Last node के link में. So I have searched it all, and I don't want to go further because there is no node. So you should come out of the loop. Or you got it somewhere, maybe first or second node. 20 ढूंढ रहे थे, मिल गया. पहले नहीं था तो आगे चलो. 20 मिल गया तो भागो. You can say that मिल गया, 20 मिल गया, and get out of the loop. Right? Yes, sir. Does it make sense? Yes, sir. So we have to keep these things in mind before we move on. So we are saying PTR is equal to. Start. So I am linking my PTR with this. This is only scenario when there is no null in it. When start is not having null, then it will go to the else part, right? Yes, sir. If it's having null, it will tell you bro, linked list empty. Okay. Else means there is something. It may be one node or two node or for whatever nodes we have. I don't care. And now I am asking user, give me the key. What do you mean key? Number you want to search the value. Give the element to find. Whatever element you want to find. And that is in my key. Ampersand of key. Scanf, percent D, ampersand of key. That means what I want to search. Right? Yes, sir. It could be 10, it could be 20, it could be 30, or it could be something which is not in a linked list. Right? Yes, sir. So two scenarios are, it may be in the linked list or it may not be in the linked list. But we are guaranteed that there are some nodes which we need to search. लेकिन मैं जाऊंगा कहां से? एक्सट्रीम केस में मैं कहां तक जाऊंगा? Null तक. So I am saying PTR is equal to start. I am putting my PTR with the start. Okay? Yes, sir. And I am putting position is equal to 1. I am putting what? Position is equal to Because I want to also see at what कि position. ये जो बंदा मिला ना किस पोजीशन पे मिला. ठीक है? अगर पहली बार पे ही मिला तो पोजीशन 1 था. तो we will say कि भाई जो ये नंबर है ये मिल गया एंड पोजीशन जो पोजीशन है 1 पे. We wanna say that ये किस पोजीशन पे मिल गया. ठीक है ना? That's why I am saying position is equal to 1. And PTR arrow data not equal to key. और तब तक मैं चलूंगा जब तक PTR arrow data key के बराबर, because this condition will be tested all the time. Okay? Yes. But there will be two conditions. Either the PTR data key के बराबर नहीं है, मतलब आगे क्यों मैं चलूंगा, इस नोड से मैं आगे तब जाऊंगा. पहली शर्त है कि वो जो एलिमेंट में ढूंढ रहा था वो नहीं था. दूसरी शर्त ये है कि आगे कोई नोड है. नहीं है. आगे नोड है वो कैसे पता चलेगा? जब इसकी लिंक में एड्रेस नल नहीं है. अगर इस नोड की लिंक में नल नहीं है उसका मतलब है कि आगे नोड है. अगर इस नोड के लिंक में नल है उसका मतलब है कि आगे कुछ नहीं है. सो दो सूरतें हैं आगे जाने की. मैं गो फर्दर. फर्स्ट कंडीशन इज कि जो मैं ढूंढ रहा था वो नहीं है. अगर है तो फिर तो मिल गया ना, फिर आगे नहीं जाना. अगर वो नहीं है जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, इसके आगे नोड होना चाहिए ना. सो वो ये एंड वाला करेगा. दिस विल टेल अस कि आगे नोड है. दिस विल टेल अस कि जो मैं ढूंढ रहा था वो इस नोड में नहीं है. क्या PTR एरो डेटा, PTR एरो डेटा वो है जो मैं ढूंढ रहा था. फॉर एग्जांपल मैं ढूंढ रहा था 20. नहीं. चलो पहले हम वो ढूंढते हैं जो हमारे पास है नहीं लिंक्ड लिस्ट में. आई एम ट्राइंग टू फाइंड 50. क्या PTR एरो डेटा की मेरा 50 अब है ना? क्या PTR एरो डेटा 50 के बराबर है? नो सर. नहीं है.
सो दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज नॉट इक्वल टू की है ना। हाँ क्या पीटीआर एरो लिंक नल नहीं है? इधर मत है। सो दिस इज आल्सो ट्रू। व्हाट डज इट मीन पीटीआर लिंक नॉट इक्वल टू नल? इट मींस इसमें नाम नहीं है। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आगे नोड है, क्योंकि अगर आगे नोड नहीं होता तो इधर क्या होता? गॉट इट? सो बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, देन इट कैन गो इनटू द लूप। लेकिन हमें लूप नहीं करना है, हमें टर्मिनेटर है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जो वहां तक जाए वो। ठीक है, तो अब क्या होगा? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो। पीटीआर आगे चलाना है ना, हाँ एक्सेस इस नोड के पास है, जाना इस एड्रेस के पास है। इसका एड्रेस ऑलरेडी इस लिंक में है, इसने अभी कर रहे थे स्टार्ट में रात में। सो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो। पीटीआर एरो लिंक इज 20, सो तब हो जाएगा पीटीआर में पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो। पीटीआर लिंक इज 20 दिस टाइम, right? So 20 will go into the PTR, so that is PTR is pointing no more to this guy. Sorry, this is 2, huh? PTR link is 2, second node address na. So PTR is equal to 2 though, so PTR is no more pointing to 1, PTR is pointing to सेकंड। again this condition has to satisfy। मेरी की में क्या है? 50 क्या PTR arrow data, PTR arrow डेटा वो की के बराबर है? नहीं नहीं है तो ट्रू है। क्या पीटीआर एरो लिंक नल है? नहीं है तो ट्रू है ना। सो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो लिंक। व्हाट इज पीटीआर एरो लिंक? 3 विल गो इनटू पीटीआर, सो पीटीआर इज नो मोर पॉइंटिंग टू दिस, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू लास्ट। ठीक है, क्या पीटीआर एरो डेटा, पीटीआर एरो डेटा क्या पीटीआर एरो डेटा की नहीं है? नहीं है, ट्रू कंडीशन। क्या पीटीआर एरो लिंक नल नहीं है? नल है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। एंड बोलते क्या बोलते हैं? दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों में से एक फॉल्स होगी, फॉल्स कंडीशन होगी। सो जब फॉल्स कंडीशन, फॉर लूप बाहर आएगा। फॉर लूप क्या आएगा? बाहर। ये बाहर आएगा। उसका मतलब है कि हमें एलिमेंट नहीं मिला है। उसका मतलब है कि अगर इस सूरत में हमें ये निकला कि हमें एलिमेंट नहीं निकला, हमने सारे छान मारे। ठीक है, वो मैं चेक यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, क्या पीटीआर एरो डेटा की के बराबर है तो एलिमेंट मिल गया, वरना बोलेंगे एलिमेंट नॉट। जब मैं इसके बाहर निकला तो मैं दो सूरत में निकलाऊंगा, या तो एलिमेंट मिला होगा या तो लास्ट नोड आया है और एलिमेंट नहीं मिला है। ठीक है ना, दो सूरतें हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमको मिल गया, जैसे जब मैं पीटीआर यहां पे पहुंचा था, क्या पीटीआर मैं 20 ढूंढ रहा हूं, क्या ढूंढ रहा हूं? क्या पीटीआर एरो डेटा की के बराबर नहीं है? है, तो ये फॉल्स हो गया ना। क्या पीटीआर एरो लिंक नल नहीं है? ट्रू, नल नहीं है, क्योंकि इसके बाद है ना नोड, तो ये वाला ट्रू था, मगर ये वाला फॉल्स था ना अभी। एंड हाँ, वेरी गुड, क्योंकि एंड में दोनों होने चाहिए। इस सूरत में भी ये बाहर आएगा, इस सूरत में क्या आएगा? मगर इस वक्त जहां पे पीटीआर है, पीटीआर एरो डेटा की के बराबर तो ये इफ ट्रू हो जाएगा। पीटीआर डेटा इज इक्वल टू की। इससे पहले जो निकला था कि जब नल पे निकला था ना, उस सूरत में ये फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि पीटीआर एरो डेटा नल वो की नहीं था, वो 50 ढूंढ रहे थे ना। हाँ, ओ इसको एक बंद रखना चाहिए ना, स्क्रीन सेवर टाइम। गेटिंग द पॉइंट? सो ये कब ट्रू? जब ये फॉर लूप से बाहर आएगा, जब ये फॉर लूप से इस फॉर लूप को टर्मिनेटर पीछे है, दैट मींस यहां पे टर्मिनेटर है। इसका मतलब है कि हम इसका बॉडी कुछ नहीं, हम पीटीआर उधर जाना चाहते हैं। पीटीआर या तो लास्ट नोड पे जाएगा या तो उस नोड पे जहां पे मिल गया, दोनों सूत्र में बाहर आएगा, है ना। क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, या तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि पीटीआर और डेटा नॉट इक्वल टू की। अगर मिल गया दैट विल बी इक्वल टू की, है ना। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आएगा। या अगर नॉट की के बराबर नहीं है और लास्ट में नल मिल गया, तो पीटीआर और लिंक नल है, नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाएगा, उस वक्त भी बाहर निकलेगा। तो दो सूत्र में बाहर निकलेगा, या तो बंदा मिल गया या तो नल मिल गया। अगर नल मिल गया तो भाग गया। उसका मतलब क्या है? नल जब मिल गया, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अगर हमारे पास की के बराबर है, एलिमेंट इज फाउंड, तो उस हिसाब से ये इफ या एल्स ट्रू होगा। इफ कब ट्रू होगा? जब एलिमेंट मिल गया। जब एलिमेंट, क्योंकि जो जहां पर मेरा पीटीआर था
जिधर मेरा पीटीआर पहुंचा जब मैं बाहर निकला, उसका डेटा, उसका की के बराबर अगर है तो मिल गया। तो पोजीशन भी हमने इंक्रीमेंट की हुई थी यहाँ पे, पोजीशन प्लस प्लस, और हमने देखा होता किस पोजीशन पे था, सेकंड था, थर्ड पे था, तो वो पोजीशन बताएगा कि भाई किस पोजीशन पे है। एलिमेंट परसेंटेज डी, कौन सा एलिमेंट, की, कहां पे मिल गया, पोजीशन। और अगर नॉट इक्वल टू नल है, अगर नल भी निकला था ना बाहर, तो वो एल्स में जाएगा, क्योंकि उस सूरत में पीटीआर का डेटा बराबर नहीं होगा की के, है ना, तो ये इसके एल्स में जाएगा जहां बताएगा भाई एलिमेंट। हाँ जी, any questions? No, sir. See this, tell me if there is any questions, you can ask. Concentrate harder on this. Any questions you can ask? Any line of code you didn't understand or something? You can tell me. Is that clear? Yes, sir. We are out of time. Now it's a lab time. It's what? Lab. Go to the VS Code, create a new file, and create this whole code yourself. All the code yourself. Do you understand? Zuri nahi ki do all the code today. Not necessary to do all the code. Look at me. It's not necessary you do whole linked list, all the operations today only. Let it be 2 operations, 3 operations. We're not running out of time. Let it take 3 days, 4 days, no problem. But do what? Think. Don't see on the other. नकल नहीं करने का, वो जो कोड हमारा है कॉपी पे है उस पे, उसको नहीं देखने का। फर्स्ट डू व्हाट, फर्स्ट थिंक कि मैं मुझे क्या करना है, गेट द कॉपी। आपको मत कि एग्जाम है यहाँ, सम यू हैव टू शो समबडी, इट इज सो यू कांट चीट एनीबॉडी ना, इट इज यू ओनली। सी द कॉपी, कॉपी पे बनाओ कि भाई ये नोड हो गया, अगर इसमें ये हो गया, अगर नल आ गया, मेरे को क्या करना चाहिए, एंड डू इट। आफ्टर यू डन, देन सी द जो कोड है, हमने जो गिवन कोड है ना, अब उसको देखो, ठीक है, फिर हाँ इस